हेलो फ्रेंड्स, आगे के वीडियो में हमने देखा था कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसकी 4 थियरी है। एनआई अप्रोच, एनओआई अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एमएम अप्रोच, दैट इज़ मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच। आगे के वीडियो में हमने एनआई अप्रोच और एनओआई अप्रोच के बारे में पढ़ा था। ये जो वीडियो है जो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच के बारे में समझा रहा है। हमने देखा था व्हाट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज़ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. Generally, capital structure comprises 2 type of capital, debt capital and equity capital. That is already covered in the previous video. Now going for the third approach, traditional approach. It is also known as intermediate approach. Traditional approach has been popularized by Ezra Solomon. It is also known as intermediate approach because it is compromise between NI and NOI approach. According to this approach, value of firm can be increased or cost of capital can be reduced by judicious mixture of debt and equity. अगर आप इक्विटी और डेप्ट का एक प्रूडेंशियल मिक्स क्रिएट करते हो तो ही मार्केट वैल्यू बढ़ती है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस्ड होता है. ये अप्रोच समझा रहा है. हियर अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्लाइन एंड द वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीजेज विद द लीवरेज अप टू प्रूडेंट डेप्ट लेवल एंड आफ्टर द ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेप्ट, coverage causes the cost of capital to increase and market value to decline. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक फिगर मेंशन की है ट्रेडिशनल अप्रोच की. फर्स्ट फेज इज सेम लाइक अ एनआई अप्रोच, सेकेंड फेज सेम लाइक अ एनओआई अप्रोच. सो दिस इज़ द फिगर ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच. चलो यहाँ पे आपको मैं स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 कैसे मेंशन किया है वो समझा रही हूँ. ऑन एक्स एक्सिस डिग्री ऑफ लीवरेज एंड ऑन वाई एक्सिस कॉस्ट इज मेंशन. नाउ concentrate on the stage 1. In a stage 1, just like a NI approach, in a stage 1 the value of firm can be increased initially, or say cost of capital can be decreased by using more debt as debt is cheaper capital than the equity share. सब लोग जानते ही है कि डेब्ट जो कैपिटल है वो चीपर है और इक्विटी कैपिटल डेब्ट कैपिटल से थोड़ा महंगा है. और अगर हम डेब्ट कैपिटल बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा. So, optimum capital structure can be reached by keeping proper debt equity mix. मिस स्टेज 1 बता रहा है कि optimum capital structure is possible. So, you have to select proper debt equity mix. So, at that particular level, we are getting the optimum capital structure. This is explained in a stage 1. Now, we are going towards the stage 2. Like a NOI approach. Beyond particular point, अभी भी हम डेट बढ़ा रहे हैं. We requires more debt amount. Beyond particular point, the cost of equity increases because increased debt increases the financial risk of equity shareholders. जितना डेट बढ़ाते जाएंगे beyond certain period of time, then what happen? Financial risk is increasing. If financial risk is increasing, then equity shareholders are expecting more return from the company, and definitely cost of equity is also increasing. So finally what happened? We are getting the benefit by keeping the cheaper capital. It is offset by increasing cost of equity. So cost of firm is being moderate or constant. Now in stage 3, still debt is increased. अभी भी हम डेप्ट बढ़ा रहे हैं. We are requires more debt.
then debt is available at a higher interest rate. So what happen, जब भी आप बैंक में जाओगे कुछ लिमिट से ज़्यादा आप डेप्ट मांगोगे तो वो क्या होगा, हायर इंटरेस्ट रेट से मिलेगा. सो cost of debt increases, financial risk also increases equity, cost of equity. So cost of equity increases. So finally what happened, overall cost of firm increases. So this is about the traditional approach. जब भी आप एग्जाम्पल कैलकुलेट करोगे ट्रेडिशनल अप्रोच का, उसका फॉर्मेट कौन सा रहेगा, NI अप्रोच का, जो हमने आगे की वीडियो में देखा है. नाउ नेक्स्ट इज मोडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच. दिस इज द फोर्थ अप्रोच, MM अप्रोच. जनरली हम उसको जानते हैं MM अप्रोच से. मोडिग्लियानी मिलर अप्रोच support the NOI approach, that is the capital structure has no effect on value of firm. NOI approach क्या बोल रहा था कि if you are changing the proportion of debt and equity, there is no change on cost of capital and market value of firm, and same thing is supported by the MM approach. Further, MM model add behavioral justification in favor of NOI approach, that is a personal leverage, that word is used. Now what are the assumptions of MM approach? First assumption is very clear, capital markets are perfect and investors are free to buy and sell. Investors can borrow without restriction. Investors are rational. No corporate tax is considered, but later on it is also considered. Then 100% dividend payout ratio. These are the बेसिक एजम्पशन. ये मॉडल के प्रपोजिशंस क्या है? एज पर MM मॉडल आइडेंटिकल फर्म मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर को छोड़ के आइडेंटिकल फर्म विल हैव द सेम लेवल ऑफ अर्निंग्स. एज पर MM अप्रोच, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल फर्म आर डिफरेंट, आर्बिट्रेज प्रोसेस विल टेक प्लेस इन द मार्केट एंड वैल्यू कैन नॉट रिमेन different. In this process, investor will switch the securities between identical firm and receive the same return from both the firm. Whether the firm is levered firm means use of debt, or unlevered firm means use of only equity, right? And receive the same return from both the firm. This is the MM model proposition. Thank you.